Hello there, everybody. Welcome back to the channel. PD10, everyone, as we get into this Career 24/7 video. PD10 for maximum discount. Anyways, everyone saw it. I already saw it before. I know you all saw it, but we're still going to talk about it. Now, I will say, preface this, I've saw a lot of protests being set up for this specifically, and I support those protests against Asif Manure, the failed marshal, all right? Anyways, Career 24/7 video today on USA goes full pro Pakistan. Awesome Manure invited to US Army Day. Now, I will just go ahead and also say I don't believe he was invited. I think he invited himself. I think it's one of those situations where he's just kind of showing up. He's like, "Hey, I'm in the area. Can I stop by?" And they're like, "Oh, okay, I guess." I actually think there's a lot of world leaders that are going there. So unless it's been specifically stated that the U.S. has invited him, but I've not seen anything of that nature yet. In this video, PD Sir explains the surprising shift in U.S. foreign policy as reports emerge of Pakistan Army Chief Asim Manure being invited to U.S. Army Day. What does this mean for India-U.S. relations and the broader geopolitical balance? Is this U.S. tilting towards Pakistan again? I don't think it necessarily means anything major, to be honest with you. In my personal opinion, I don't think this is going to lead towards anything whatsoever. It's just one of those situations where I don't know, man. It's complicated. It's very complicated. I don't know what's going on. I don't know why the world doesn't see, the failed state of Pakistan, and they don't see what Pakistan truly is. It feels like I'm going crazy in my own country, because even I can clearly see it, and it pisses me off. But I do have hope that they won't side with Pakistan again. Although that being said, this whole situation with Iran and Israel potentially launching an attack on Iran and the U.S. potentially getting wrapped up in that, and we'll see. We'll see what happens. But again, it's like the whole world is going crazy because the Pakistan gets those loans from the World Bank, they get the loan from the IMF, they get the loan from the Asian Bank. They're about to potentially purchase German weaponry as well. We should watch the video. We should watch the video. PD10, everyone. PD10. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। देखिए, जियो पॉलिटिक्स का एक रूल है, नेवर गो फुल पाकिस्तान। यूएस जस्ट वेंट फुल पाकिस्तान। I don't never go full Pakistan. It's pretty funny. नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल। That's pretty funny. पाकिस्तान के Do people even understand this reference? Do most of the people watching this even understand this reference? I don't know if they do. I'm sure they do. Well, Tropic Thunder is a movie from 2008, and even then, I would say it's fairly niche movie as well. This is Robert Downey Jr. In blackface in the movie. He's in the movie. It's a movie about a parody movie or something along those lines. Anyways, he's in blackface. He's talking to Ben Stiller, and Ben Stiller is telling Robert Downey Jr.'s character about his failed movie, about him acting like a mentally disabled person, and Robert Downey Jr. is like, "Never go full retard. You just went full retard," and it's like. I don't know why I'm explaining this. Anyways. और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल। पाकिस्तान के बारे में यूएस के आर्मी जनरल ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। ये कह दिया कि Pakistan's phenomenal partner in anti-terrorism efforts, U.S. Army military commander. पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है Phenomenal आतंकवाद से लड़ने में। partner. और यहाँ पर यह भी कह दिया कि हमको अच्छे रिलेशंस चाहिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ रिलेशंस सुधारने में पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब कर देंगे। वी विल हैव गुड रिलेशंस विद बोथ ऑफ देम। और ये जो स्टेटमेंट्स है यूएस जनरल की, ये एक्चुअली इंडिया की बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट्स को बिल्कुल काउंटर कर देती है। यूएस जनरल ओपनली पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। ये तक कह दिया
कि पाकिस्तान का Michael रिकॉर्ड Kurilla. आतंकवाद से लड़ने में बहुत अच्छा है। और इसके बाद एक रिपोर्ट ये भी आती है कि पाकिस्तान के अभी जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जो बन चुके हैं फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, इन्हें यूएस में इनवाइट किया जाएगा फॉर ट्रम्प्स मिलिट्री डे परेड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक The जेस्चर है। मैंने military आपको बताया day था parade, एक बहुत ही man. Isn't इंपॉर्टेंट that वीडियो going में, to be इस a वीडियो को fun इतने one? व्यूज मिले नहीं, पता नहीं क्यों, बट दिस वाज सच एन इंपॉर्टेंट वीडियो। मैंने इसमें आपको समझाया था कि ट्रंप ने लिटरली पाकिस्तान को बचा लिया फ्रॉम अ ट्रैवल बैन। और उसके अलावा क्यों आज के समय पैसा, बिटकॉइन एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज में। और आप एक बात नोट करना, कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप Well, it's not पाकिस्तान की जो Bitcoin. लीडरशिप है, It's like Trump's. It's like one of Trump's other like shit coins, isn't it? It's not specifically Bitcoin. इसकी तारीफ करते जा रहे हैं। कई वीडियो सामने आई है जहां पे ट्रंप ने बोला है, मुझे पता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं ये बात बोलता हूं, मगर पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत अच्छी है। ये जो क्लिप है ये आप देखिए, फिर बाकी जो आज के समय डेवलपमेंट्स हो रही है इस पर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली इस सबका एक बहुत ही गहरा लिंक है F-35 से। F-35 फाइटर जेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट जस्ट हैव अ व्यू कि डोनाल्ड ट्रंप लेटली क्या स्टेटमेंट्स दे चुके हैं पाकिस्तान के बारे में। trade deal, and Pakistan likewise. They have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but it is what it is. And they stopped that war. नाउ ये स्टेटमेंट थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। अब आप देखोगे यूएस के सेंट्रल कमांड के जो आर्मी जनरल ये क्या स्टेटमेंट देंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, रिसेंटली काफी वायरल भी हुई थी इंडियन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally to include against the homeland. Right now, what we saw is the Taliban in going after ISIS-K. They hate each other. Pushed a lot of them into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. ना ये जफार जिसकी बात कर रहे हैं ये आतंकवादी है जो पाकिस्तान ने वापस यूएस को पकड़ा दिया था। मैं ये एडमिट करूंगा पाकिस्तान को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे करना है, चाहे वो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से हो या फिर कोई एक रैंडम आतंकवादी पकड़ लिया उसी वक्त यूएस को भेज दिया और डोनाल्ड ट्रंप को इसे एक बोलने का मौका मिल गया कि देखो हमने एक आतंकवादी यहाँ पे पकड़ लिया है। पाकिस्तान काफी अच्छा प्ले कर रहा है यूएसए को, बट यूएसए क्लियरली ये जो अब प्रो पाकिस्तान अप्रोच ये अपना रहे हैं ना, इट माइट बैकफायर बिग टाइम। क्योंकि आज ही एफबीआई के जो चीफ है कश पटेल, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि एक पाकिस्तान का आदमी यूएस Yeah, he came out and said that Pakistan, they caught a Pakistan Islamist terrorist in Canada that was planning an attack in the U.S. में बड़ा आतंकवादी हमला करने वाला था, इसको रोका गया। ये जरा आप देख पाओगे वही देश जिसको यूएस कह रहा है कि जी बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली कंट्री है, यूएसए का आतंकवाद से लड़ने को हेल्प करेगा। एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल ने कहा है, मेजर न्यूज अर्लियर दिस आफ्टरनून, मोहम्मद शहजाब खान एक पाकिस्तानी सिटीजन, अगेन ये ऑफिशियल ट्वीट है बाय द एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल, एक पाकिस्तानी सिटीजन जो कनाडा में रह रहा था, इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया था यूएसए में ऑन चार्जेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट टू आईसिस। अब सोच कर देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड का आर्मी चीफ कहता है कि जी आईसिस से लड़ने के लिए पाकिस्तान इनकी हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी सिटीजन कनाडा में बैठकर, जहां पे कनाडा में आप जैसी आपको पता है एंटी इंडिया एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पर ये आईसिस का सपोर्ट कर रहा है ताकि आतंकवाद किया जा सके। इधर आप देख पाओगे इन द फॉल लास्ट ईयर खान allegedly planned to travel from Canada to New York to carry out a mass shooting in support of ISIS at a Jewish center in Brooklyn। ये हालत है पाकिस्तान की कि यहाँ से ऐसे लोग निकल रहे हैं जो यूएसए में इस टाइप के अटैक करने वाले हैं। और मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, आई मीन लग रहा है कि यूएस एक बड़ी मिस्टेक करके सीखेगा, क्योंकि यूएस की प्रॉब्लम ये है, ये लोग पाकिस्तान के एक दो जेस्चर से ना ये समझना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद और जो फंडामेंटलिस्ट जो ये लोग हैं ये अलग हैं, और जो इनकी आर्मी है और जो Yeah, it's exactly this. It's maybe they know and they just don't care. Actually, maybe we're giving the U.S. government a little bit too much credit. Maybe they do know that the terrorist encampments in Pakistan and the Pakistan army are one and the same, and they just don't care because they want to use them for their own benefit. की सरकार है वो अलग है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फ्यूनरल्स की इमेजेस सामने आई है पाकिस्तान, दिस क्लियरली प्रूव्स इनकी आर्मी, इनकी सरकार, ये सब लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अलग है कुछ पाकिस्तान की आर्मी। आई मीन ये बात इंडियंस को पता है, इवन अफगानिस्तान में भी जो पीस लविंग लोग हैं उनको भी पता है। ये मैं कहूंगा यूएस एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर करने वाला है। और अगर आप पूछ रहे हैं यूएस ऐसा ब्लंडर क्यों कर सकता है, आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं ये इंडिया को ना एक थोड़ा सा रिप्लाई भी दे रहे हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके। रीजन इसका सिंपल है, अब देखिए धीरे धीरे इंडिया से ये न्यूज आनी स्टार्ट हो चुकी है
कि F-35 भारत परचेज नहीं करने वाला। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में काफ़ी पहले बता दिया गया हो और इसलिए लगातार ये उल्टी सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कश्मीर के बारे में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में, क्योंकि यूएसए ने काफ़ी हैवी पुश किया था F-35 फाइटर जेट के लिए। तो F-35 को एक्वायर करने का जो ये प्रपोजल है, इसको इंडिया कंसिडर तक नहीं कर रहा। बात ये चल रही है कि या तो हम AMCA को और तेजी से बिल्ड करेंगे और साथ ही साथ हो सकता है कि रशियन Su-57 फाइटर जेट्स हम एक्वायर करें। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा ब्लंडर माना जाएगा कि इंडिया को मना नहीं पाइए कि F-35 परचेज करो। इंडिया फिर से लार्ज स्केल पर रशियन वेपन्स परचेज करने वाला है और ये तो खैर जो डील होगी एक मेगा डील होने वाली है और कई सालों तक इस डील का इम्पैक्ट महसूस किया जाएगा रीजन पे। तो अभी तो आने वाले समय में देखिए थोड़ा सा इंडिया को भी बताने के लिए कि अब ठीक है फिर पाकिस्तान भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंडिया इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी। यूएस मीडिया भी हो सकता है कि थोड़ा सा हॉस्टाइल हो जाए अगेंस्ट इंडिया, बट अभी खैर यूएस ने यही रास्ता चुना है। इन द पास्ट भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर आए हैं, यूएस ने उनको काफी वेलकम किया है, व्हाइट हाउस में बुलाया, काफी सम्मान दिया। लग रहा है कि आसिम मुनीर भी बहुत जल्दी यूएस जाएगा और वहां पर भी उसको इसी तरीके से वेलकम किया जाएगा। ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन, बट इन द एंड देखना ये होगा कि क्या यूएस ये पॉलिसी रिग्रेट करेगा या नहीं, क्योंकि जिस कंट्री का ये साथ दे रहे हैं, इस कंट्री का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये आतंकवादियों का समर्थन करता है। तो आने वाले समय में देखिए बहुत ही विचित्र दृश्य देखने को मिलेंगे। आसिम मुनीर यूएस जाएगा, काफी इसका भव्य वेलकम होगा, ट्रंप इसका वेलकम करेंगे एंड लग रहा है यूएस ने डिसाइड कर लिया इनको क्या करना है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, बट अगेन हमने भी जो डिसीजन लिया है इन द स्वॉरो ट्रीटी को अबेंस में डालने का, हम उस पर अभी भी खड़े हैं। पाकिस्तान के कई जो एयर बेसिस हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और पाकिस्तान दर दर Wow, the subtitles are so bad there. ढूंढ रहा है कि इनको कोई एक एयर डिफेंस सिस्टम बढ़िया मिल जाए, क्योंकि HQ-9 काम कर नहीं रहा। ओवरऑल इंडिया हैज द अपर हैंड, बट देखना ये होगा यहाँ पर कि सिंस यूएस अब इतना प्रो पाकिस्तान हो चुका है, तो कल को जब ऑपरेशन सिंदूर हम रिज्यूम करते हैं तब उस वक्त यूएसए की क्या स्टेटमेंट्स आएंगी। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्या we'll see. यूएस ऑल टुगेदर We'll see what इंडिया happens. के साथ रिलेशंस खराब करना शुरू कर देगा फॉर द सेक ऑफ We'll पाकिस्तान और see नॉट। दिस विल बी what वेरी इंटरेस्टिंग टू happens, सी। अभी man. कुछ इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी बहुत सारी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए कभी किसी PD10, everyone. PD10. Use code PD10. It's a mess, isn't it? It's one giant mess. What can we say? What can we do? What can I do? I mean, it doesn't account for much, but I have personally messaged my state governor, my state representative, my personal thoughts on the matter. Of course, I'm just one person and they never talk to individual people, right? So, of course, I never heard anything back from it. I never expected to hear anything back from it. It was just the principle of it. The principle of sending out, what my opinion on this whole debacle is. I don't know, man. I really don't know. I think I really do just think that the U.S. is just trying to, use Pakistan in some sort of potential front against Iran. I think that's the way the world is shifting. I think there's major stirrings about Israel attacking Iran nuclear sites before Iran can finish building their nuclear weapon. And then, of course, the U.S. is going to be dragged into that because we're so tied up with Israel. And then, since we're not in Afghanistan, as much as we were, I mean, I think that Trump has even started pulling non-essential people out of there in preparation for another potential Middle East war. I don't know. I really don't know. It's unfortunate. It's very unfortunate. It's very, very unfortunate. Where do you think would be better for me to live? Brazil? I'm liking Brazil. Maybe I can buy like a nice little ranch in Brazil. I don't think as a non-citizen I can buy any land in India, can I? Probably not, right? But I can buy a nice decent plot of land in Brazil. I'm a big Brazil fan. Let's read some of the comments. That's why we Indians always consider Russia as our true friend. Dr. Sashi Tharoor was right about this man, Donald Trump. Enough of America. A few things to remember. F-35 deal was canceled. The Noorkhon base. I don't think the U.S. was in the Noorkhon base. Iran nuclear approach. India growth. I don't think the U.S. cares about India's growth.
Number 2 and number 4 here, I don't think the U.S. has any interest in. I think, yeah, the F-35 deal, that's probably pretty upsetting to like Trump's administration. And then then Iran, yeah. What is this? Now India should fully support Russia. I want to see what the comments say. We can't, maybe in geopolitics, Russia support us, but when it comes to money, we don't earn money from Russia. And at the end, money matters. True. It's all about money. It's all about the money, isn't it? Trusting the USA is like trusting a snake. Snakes become infamous because of them. If Pakistan could give rishwat to Trump and company, why can't India give? It's failure in Indian foreign policy, isn't it? People like you have no common sense, nothing literally. You guys are talking like kids. But Indian foreign policy? So should we act as American puppet like Rural Gandhi? CIA agents spotted when America has helped India? Nope, that would be bad. How to use YouTube Matt. I'm from Pakistan and we are Black Mamba. Psst. Okay. A picture of awesome manure is hilarious. So many medals, only faces left out. As Indians, we are never surprised. English is the second language of the U.S. versus hypocrisy. I'll feel pity for those innocent Indians who make comments from friends and enemies. India has only one friend, and that's India itself. To cooperate with other countries, we have to find common sense. Then they say, why is India choosing Russia? Trump said issue between India and Pakistan is going since 1500 years. Well, in that, he was referencing Hinduism versus Islam, I think. Thank you, USA, for showing your true face and your true color. It always has been. Yes, India is very self-reliant and world-renowned nation. That is why we run after Russia. We rely too much on foreign technology instead of making our own. What guarantee does Russia support us? If our stance is changed, then whom will you make Papa? A day without hypocrisy is a day wasted. I think we should buy those Russian jets source code. When you have friends like America, who needs an enemy? For India, the democracy of USA is more dangerous than dictatorship of Russia, China, and North Korea. Even Snake. According to the West, U.S. inviting awesome manure. India inviting Putin. Unintentionally, USA helped India acquire the Su-57. That's actually good for us since we'll be more focused on our country instead of talking about getting a job in U.S. or their citizenship. This is it. Just make the cavalry engine. I can frequently say that the very important statement by Henry Kissinger. I know that one. 2 minutes silence for those who think USA is India's friend. India's best friend is India. All the devotees support Trump. There is. U.S. to Pakistan. The U.S. needs Pakistan for its rented army and military base in the region. If India thinks that the U.S. will favor India someday, then it means they have not learned anything from the past. The U.S. will never let Pakistan be destroyed nor prosper. Don't cry. Thank you. On the contrary, Pakistan is doomed. U.S., whatever this is, whosoever has come closer to U.S. in history, all the nations have suffered heavy losses and betrayal. I know U.S. more than U.S. They are doing same thing. In geopolitics, no one is your friend. India should help Russia. From the last 11-year foreign policy dedicated for Adani contracts, no national interest, hollow promises, and EVM tempering won't last long. Trump is facing a bad time. First smile and now embarrassing Pakistan. India should purchase oil and export defense to Iran and Venezuela soon. You don't want to back Venezuela. Venezuela is a shithole. What? Why are you bringing up Venezuela? Venezuela is like the worst. That's why India don't trust USA.
Donald Trump is totally money-minded. Ethics, morals are nothing for Trump. True. He is, he is a businessman after all. It's all about the money for him. It's all about the money and his legacy. He's trying to build up a big, strong legacy to outdo everyone else's legacy. So we'll see what happens. All right, guys. India ditched Russia for USA. Soon America will face the same as the UK or even worse. I hope not. Anyways, guys, I'll catch you on the next one, yeah? The link to the video will be in the description down below. Take care. Goodbye.